वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट 𝓕𝓸𝓵𝓵𝓸𝓀। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जानेंगे कि कब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स और वो प्रोफेशन जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं कब तक उनको एक्सेस होगी और कब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी जॉब्स, हायर एजुकेशन और विज़िट के हवाले से इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वहाँ पर करंटली मौजूदा स्टूडेंट्स किस तरीके से अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं और जॉब किस तरीके से कर रहे हैं और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ पर जो मौजूद टीचर्स हैं वो किस तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए क्या थॉट्स रखते हैं और किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से मिस्टर गैरेथ, जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, और इसके साथ साथ ज्वाइन किया है हमें वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर करंट इनरोल्ड स्टूडेंट मिस्टर 𝓕𝓸𝓵𝓵𝓸𝓀 ने भी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आहिला मुश्ताक से भी, जो करंटली एकेडमिक ऑफिशियल्स हैं एट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। थैंक यू थ्री ऑफ यू। Mr. Garrett, thank you very much for joining us right away from Sydney. Thank you very much once again for your precious time. This is the most appropriate time we needed you here because we want to know a lot more about studying option there in Australia in this current time. So my first question, Garrett, a lot of hundreds of Pakistani students, they are waiting for their higher education, especially there in Western Sydney University. So please let us know about the borders opening. This is a hindrance in their higher education at the moment. Indeed, yeah. Thank you, Shakil. Great to be with you, and thanks to YNN for hosting me today. Yes, situation. The current situation in Australia is that it is a developing scenario at the moment. We have been working very hard in New South Wales in particular, jointly with all the universities in this state, in developing a plan for what we call secure corridors. This is a safe corridor return for international students coming to New South Wales. We've been working, the Vice Chancellors and the senior leadership teams at the universities have been working to put together a plan in conjunction with the New South Wales state government, the New South Wales Health Department and the New South Wales Police, in order to organise for quite a well-organised program of students returning to Australia, and particularly, obviously, to New South Wales. The New South Wales government have very recently endorsed this plan. They have agreed on the terms and the circumstances on which we can bring international student visa holders back to Australia. And it's currently sitting with the federal government, and we're waiting on the outcome and their decision and hopefully a very, very approval very soon. So we're looking forward to that at the moment, and we hope to have some more news on that. But the good news is the New South Wales state government has approved the university's program, and it shouldn't be too long before we've got a final decision and we can start flying students over. Great. It's a fantastic news at the moment for all international students that government is now considering to bring back international students to Australia. That's fantastic. Garrett, update us one thing more. Currently, we have got a news that government has allowed a few states, they have allowed 160 students at the moment to bring back to Australia. When those students would be moving, or you can say the returning back to Australia, what is the time frame and when students can move over there? And secondly, let us know when this number is going to be increased to. Sure. The current situation is at the same time that the New South Wales state government had submitted their safe corridor, secure corridor program for international students, there's another proposal from South Australia, and currently the status of that one is that it has received Commonwealth government approval. And you're right, that's right. It was for a smaller cohort of 160 returning students.
that is likely to be put in place and start happening quite soon. And the South Australian state government will be organising for expressions of interest and for the universities in that state to start organising expressions of interest from students. New South Wales, we hope to soon be following with the Commonwealth approval. And in our example, we will have initially 250 students every fortnight, every 2 weeks returning. There will be a priority, and this is an important consideration, a priority for, and certainly within the New South Wales program, and I'm pretty sure in terms of the South Australian one as well, that the initial cohorts of returning students will be existing enrolled students at the universities here. New commencing students will be later, but initially they're reaching out to students who've already commenced and who are stuck offshore in their own countries at the moment. So we have a target plan to increase that 250 per fortnight and to scale up as we move through 2021. And so that at the end of the year, there will be a larger number arriving back towards the end of 2021. And we look to be returning students in very, very solid numbers in 2022. So that's the situation at the moment. Great. This is, again, it's fantastic. It was believed earlier by the government and experts. I have interviewed many people. They were expecting that the things would move on for 2022. But the situations, the news that we are getting at this time, they are really encouraging for the aspirant students who really want to study there for their higher education in Australia. Gareth, keeping a strong eye on the day-to-day happenings and news, especially working in a university and connecting on daily basis with the border agencies, what do you see that when students would be capable to move to Western Sydney University, tentatively I'm asking about? Yeah, until we've got the final Commonwealth Government approval of the New South Wales program, we can't begin the process of organising for students to return. We do hope so. We are dependent on their final endorsement. As we've seen, they've been fairly quick to endorse and approve the South Australian program, and we hope that New South Wales will be happening very soon. As soon as we've got Commonwealth Government approval, we will be switching on the machine of organising for students to return. As I say, we'll be reaching out to initially a fairly small cohort of students who are distributed globally, and then we will slowly ramp up this program over the coming months. But watch this space. We hope to have some very positive news. It was great that we had our New South Wales State Government announce this formally with their approval 2 weeks ago. And we obviously are expecting the federal government to follow suit very soon. But as for the time frame, I can't say anything more until we've got that Commonwealth Government approval, Shaquille. I completely understand, and we wish you with a very good number of students, and we wish you that borders should be open for international students soon. And you know that there is no other way. The countries has to take steps to bring international students back, as other countries currently are doing in UK, USA, Canada. So similarly, Australia has to take a step. So they are quite near to take this step to bring back the international students. Gareth, thank you very much for the updates. Asad, thank you very much for joining us right away from Australia. थोड़ा सा हमारे बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी तलबा के लिए ये बताएं कि आप करंटली ऑस्ट्रेलिया में किस प्रोग्राम के लिए गए हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं, और करंट वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल एजुकेशन. Thank you for having me, Shaquille. My name is 𝓕𝓸𝓵𝓵𝓸𝓀. I'm currently studying a bachelor's of ICT. I just finished my bachelor's in Western Sydney University in New South Wales, Australia. So currently the situation that's going on right now is we've moved on from total lockdown and we're starting to have classes on campus.
which is very good, since a lot of students, I feel, don't actually learn a lot based on online learning. Great. I myself had a few issues when we switched to completely online, but we had to get used to it depending on basing it off of the whole pandemic situation. But now that everything is going back to a normal situation, pre-COVID, as one would say, most classes are on campus and everything is going back. असद, ये बताएं कि आपका करंटली आप कोविड की सिचुएशन भी आपने देखी, कोविड से पहले भी आप वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एज अ बैचलर स्टूडेंट्स देयर एट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, तो आपका अभी तक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का? Experience overall has been great. The support, the engagement from the university has been amazing. Okay. I've seen, even myself, I've struggled through the pandemic financially, mentally, emotionally, and I can say with no doubt that the university has supported me through everything, especially financially, judging by the fact that a lot of students couldn't actually pay their fees. So what they set up was a payment plan in which you could pay your fees in installments over the course of your entire semester. Asad, you're working as a president of International Student Association. ये एक बड़ा रोल भी है, तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स का ये जो रोल है ये करंटली क्या है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे अभी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल रोल हो सकता है आपका? Of course. So the current role of being a president of the International Student Association is that I personally have to look after a certain body of international students coming in. It's a voluntary role, so it depends how many people like to join, how sociable they are. But what I like to do personally is to make them feel at home, especially with Pakistani students. Great. So that you come to a new country, one that doesn't speak your native language, and you have to speak in English mostly. So sometimes you just want to speak with someone who speaks your native language, such as Urdu. So what I like to do is I personally like to reach out to them just to make them feel more at home, make them feel more welcome into this country. ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आप, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू कनेक्ट विद यू, टॉक अबाउट देयर क्यूरीज, कंसर्न्स, और जो ख़ास तौर पे जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो नए स्टूडेंट जाते हैं, दिस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि जिनको आप यू कैन मेक देम अवेयर अबाउट द यूनिवर्सिटी कल्चर, गाइडेंस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. मैं आगे बढ़ूँगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्टिनेंट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, उनके माइंड में ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग स्टडी एक स्टूडेंट अपने जो अखराजात हैं उनको किस तरीके से कूप कर पाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से होती हैं. तो आप जैसा कि स्टूडेंट है वहाँ पे पिछले 2-3 साल से, तो हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और क्या वो अपने अखराजात को पूरा कर लेते हैं वहाँ पे? Yes, of course. Job opportunity wise, everything is based on how much effort you put in. When I first got here, it was I wouldn't say it was very, very hard, but it was challenging to find a job. I had to reach out to many recruiters, many companies, and then finally I landed a job, and it was a parking job. So I just worked in a parking lot. I helped people come in and out of the mall. But slowly but surely, after that first job I got, it gave me one reference, which is very, very important in gaining a job. So after I got my first reference, I was able to apply for better jobs. And right now, I'm actually employed with the university, working as a student liaison officer. Okay. So I basically help students enroll into their studies, help them with any issues related to how to make contact with the university, who to contact with their enrollment, or any other inquiries they have. Excellent. तो थोड़ा सा नाजरीन को आपने मेरे सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो ये
कि ओवरऑल जनरली वहाँ आप प्रेसिडेंट भी हैं स्टूडेंट एसोसिएशन के, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होते हैं। ओवरऑल जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, क्या वो अपनी लिविंग वगैरह ड्यूरिंग देयर स्टडीज वो अपने एक्सपेंसेस लिविंग वगैरह के पूरे कर पाते हैं? Yes, of course. As I said, it just depends on how hard you work for it. The more effort you put into it, the easier it is for you to actually make do with all the resources. It's not that hard to actually get by working within a 20-hour limit per week. It is just finding the right job and essentially how much effort you put into that job and into your studies. Great. Asad, it's a great pleasure to see you working with the university at the moment. किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब ले लेना। तो आपके इस पोर्टफोलियो तक, इस जॉब लेने तक, what role university has played in your personal and academic development, please? Of course, yes. I'm not too sure about other universities, but with Western Sydney University, we have this program called career workshops, which is run by the careers team. Within these workshops, they help you acquire skills which are more suited to employers, so which are more employer viewable. So when an employer looks at your resume, they see, oh, somebody's done this, this is what I want. So in terms of what the university has done for me, I would say they've given me the opportunity to actually go through with these workshops and realize these are the skills that employers are looking for, and as well as help me with my resume itself in order to get these jobs. All right, fantastic. असद, अभी आप वहाँ पे हैं, बैचलर्स के बाद क्या प्लान है? मास्टर्स के लिए जाएंगे या पाकिस्तान वापस आएंगे? अभी तक वहाँ की क्वालिफिकेशन सिचुएशन और जॉब से कितना मुतमईन है? Yes, of course. Overall, I'd say right now, I'm kind of torn between pursuing my master's and going for jobs. So I'm kind of in between them both. I'm trying to attend most of the course information sessions going on from Western Sydney University and other universities as well. As well as trying to apply for other jobs closer to my field, which is just cybersecurity. So I'm not too sure what the future holds for me, but right now I'm just going with whatever's going on. Fantastic. Asad, one more and the last question. ये बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो अभी पाकिस्तान में हैं, ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा खास मैसेज जो दैट दे मस्ट नो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया? I'd say build up your skills related to your own field or to anything that you can use in order to get a job. As when I first came here, that was the main issue I had, as I had no personal skills that would allow me to land a job related to my field. Great. Asad, thank you very much. It was a pleasure talking to you and very fruitful information for prospective Pakistani students to study there at Western Sydney University. Thank you. Miss Ayla, thank you very much for joining us from Australia. मेरा सबसे पहला सवाल हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में करंट रोल क्या है और क्या ड्यूटीज सरअंजाम दे रही हैं, प्लीज़? जी, अस्सलाम वालेकुम शकील। मेरा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में जो करंट रोल है वो एक सीनियर लेक्चरर का है स्कूल ऑफ बिजनेस में। मैं मार्केटिंग के डिसिप्लिन में यूनिट कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके साथ साथ मैं स्कूल ऑफ बिजनेस की एकेडमिक कोर्स एडवाइज़र हूँ फॉर हायर डिग्री रिसर्च स्टूडेंट्स, जिसका मतलब है PhD स्टूडेंट्स और मास्टर्स ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स। ग्रेट। आहिला, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे पोजीशन और डेजिग्नेशन के ऊपर काम करती हैं, तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, दे विश कि उनका जो एक अच्छी जॉब हो, यूनिवर्सिटी की जॉब हो और बच्चों को पढ़ा रहे हों, टीचिंग की जॉब हो, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन दिस इज़ अ ड्रीम जॉब फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एज वेल। तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको ये जॉब किस तरीके से, how did you acquire it and how much you are satisfied with? मैं यहाँ पे शकील ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स मैं जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। It is a dream job definitely for any academic.
اور یہ جاب کس طرح مل سکتی ہے؟ یہ جاب صرف پی ایچ ڈی یا کسی ڈگری کے ہونے سے نہیں مل سکتی، صرف پیپرز پبلش کرنے سے نہیں مل سکتی. اس کے لیے سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سسٹم کو سمجھنے کے لیے میرا خیال سے نہ صرف اکیڈیمیا میں بلکہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی نیٹ ورکنگ کرنا، اس کو اگین ایک طرح سے لرن کرنا کہ نیٹ ورکنگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے راستہ اپنا نکالنا وہ بہت ضروری ہے. زبردست، ایکسیلنٹ. آئلہ، جیسا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں، آپ سڈنی میں بیسڈ ہے، تو وہاں پہ سڈنی کے اندر خاص طور پہ جو نئے آنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اور لوکلی بھی، تو نئے پاکستانی آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ سڈنی بیسڈ کوئی کمیونٹیز ایسی ہیں، پاکستانی کمیونٹیز کچھ اس طریقے سے کام کر رہی ہیں جو خاص طور پہ نئے آنے والے بچوں کو ویلکم کر سکیں، سپورٹ دے سکیں مورلی، ایتھیکلی اور ایک سسٹم وائز بھی؟ جی، اس میں ڈیفینیٹلی ایک تو خیر میں سب سے پہلے یہ کہتی چلوں کہ پورے آسٹریلیا میں there are 91,000 پاکستانیز. ان 91,000 پاکستانیز میں سے زیادہ تر جو ہیں، more than 60% پاکستانیز نیو ساؤتھ ویلز کا جو ہمارا یہاں پہ اسٹیٹ ہے اس میں سیٹلڈ ہیں، اور اس میں سے بھی میجورٹی پھر سڈنی سٹی میں. مزے کی بات یہ ہے کہ سڈنی سٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے سڈنی بہت بڑا شہر ہے اور اس کے کئی آگے سے ریجنز ہیں، تو ویسٹرن سڈنی جو ریجن ہے وہاں پہ بہت بے شمار پاکستانی ہیں. ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی ویسٹرن سڈنی ریجن میں ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو سبربز ہیں، جیسے ایک روٹی ہل سبرب ہے، ماؤنٹ ڈرویٹ ہے، ہمارا پیرامیٹا جس میں ہماری اپنی یونیورسٹی ہے وہ ہے، اس میں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ باقی سبربس کے نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری مسجدیں بھی ہیں، ہمارے بہت ساری فیملیز نے آ کے ادھر سیٹل ہوئے بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از آپ جب اس سبرب میں آتے ہو، اس ریجن میں آتے ہو، تو یو فیل مور ایٹ ہوم. پھر آف کورس یہاں پہ کئی 2-3 تو پاکستان ایسوسیشنز ہی ہیں. ہمارا جو کاؤنسلیٹ کا آفس ہے وہ یہاں پہ بہت ایکٹیو ہے، اور ہر یونیورسٹی میں، صرف ویسٹرن سڈنی میں نہیں بلکہ باقی بھی یونیورسٹیز میں پاکستان ایسوسیشنز ہوتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس آپس میں بہت نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں. جو ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے فرینڈس ہیں جو کہ جن کی ایجنسیز ہیں جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں ہیں، تو وہ اپنے طور پہ بھی ایونٹس اور ون آن ون سیشنز آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. تو سڈنی بیکاز اٹ از سو بگ، بیکاز اٹس اے بگ سٹی، اور چونکہ پاکستانیوں کی اس سٹی میں تعداد سب سے زیادہ ہے، اور آف کورس ویسٹرن سڈنی میں ہے، تو اس لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کمیونٹی گروپ مل جائے گا جس میں آپ فٹ ان ہو جائے اور ان سے آپ تھوڑی ایڈوائز اور گائیڈنس لے سکتے. دیٹس ریئلی فینٹاسٹک، زبردست بات ہے، اور یہی خاص طور پہ ایک نئے جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی انکریجنگ چیز ہوتی ہے کہ آلریڈی وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں اور وے فارورڈ گائیڈ کر سکیں. دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ. آئلہ، آپ سے آخری سوال، یو نو ان دس کووڈ سچویشن پوری دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس گاٹ ڈسٹربنس، ٹیچر گاٹ اینڈ ایوری دا ہول سسٹم گاٹ ڈسٹرب. تو اس کانٹیکس میں آپ نے جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھاتی تھی، جو اسٹوڈنٹس تھے آپ کے، ہاؤ ڈڈ یو سپورٹ دیم اسپیسیفکلی ان دس چیلنجنگ سچویشن پلیز؟ شکیل، سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپارٹ فرام بینگ این ایکیڈیمک آئی ایم آلسو دا انٹرنیشنل لیڈ فار پاکستان، وچ مینس کہ کووڈ سے پہلے بہت فریکوینٹلی میرا ٹرپ لگتا تھا پاکستان ٹو participate in different events جس میں اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز وغیرہ کر سکتے ہیں. COVID has been absolutely a disaster all over the world. Having said that, میں یہ ضرور کہوں گی کہ Australia has been one of the safest countries in the world as far as COVID is concerned. کہ ہمارے number of cases, fatalities have been the lowest. Students نے بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، لیکن I would say کہ ایک تو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اپنی پاکستانی کاؤنسلیٹ کی طرف سے. دوسری جو ہمیں سپورٹ ملی ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایسے یہاں پہ فنڈ شروع کیے، اور ڈیفینیٹلی ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی میں ہمارا جو ایک تھا اسٹوڈنٹ ہارڈشپ فنڈ،
कि कम से कम स्टूडेंट्स के लिए मील्स, ग्रोसरीज वगैरह हम लोग डेफिनेटली तैयार करके और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। चूँकि मैं यहाँ पे डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ भी लिंक्ड हूँ, जिसमें डेफिनेटली मैं नाम लूँगी ईदी फाउंडेशन का, और जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन है, उन्होंने ऑन ग्राउंड आके भी बहुत मदद की है। बल्कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी को भी इनमें से कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जिन्होंने ग्रांट्स दी हैं, डोनेशंस दी हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर हमारे तौर पे, हमारे बिहाफ पे मदद कर सको। सो आई थिंक जो ये तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं, बहुत बड़े बड़े भी प्रॉब्लम थे, लेकिन इसमें जो कुछ कोशिश हुई है वो ये है कि हम लोगों ने काउंसलेट के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, कम्युनिटी के अपने जो इंडिविजुअल्स थे, और फिर कुछ कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या कहने का मकसद ये है कि academically plus socially you guys really help the students in this challenging time. Ayla, it was fantastic talk and experience to talk to you about international students perspective. Thank you very much and take care of yourself. Bye bye. Thank you. जी तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।